Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor in your college। जैसा कि आपको पता है कि अभी कोरोना बीमारी का दौर चल रहा है, अतः हम ये वाला मोड टीचिंग का अपना रहे हैं। अतः आप भी इस तरह की फॉर्म का इस्तेमाल करें, इसमें पढ़ें। पहले आप यूजी की बुक्स पढ़ें, फिर उसके बाद एमएससी की बुक्स पढ़ें, फिर रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ें जिसका कि हम रेफरेंस दे रखे हैं और ये हमने आपके ग्रुप में भी शेयर कर रखे। जब आप इस तरह से प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे और जैसे हम ऑनलाइन आपके टेस्ट भी ले रहे हैं तो आपकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और क्वालिटी ऑलवेज स्कोर, कहा गया है कि क्वालिटी ऑलवेज स्कोर। अगर आप अच्छा पढ़ेंगे और अच्छा स्टडी मटेरियल लिखेंगे तो नंबर अपने आप अच्छे आएंगे। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो इसी को हम कंटिन्यूस करते हुए आपको पढ़ा रहे हैं। ये आपका सिलेबस है, हर क्लास में पहले बताते हैं कि ये आपका सिलेबस है और जिसके अंदर हम यूनिट 4 को हम ले रहे हैं। जो टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन, ये वाला पोर्शन है यूनिट 4। कुछ पोर्शन हमने पढ़ा दिया है जैसे ब्रीडिंग सिस्टम, पॉलिनेशन, ये वगैरह पढ़ा दिया है। तो अभी हम ले रहे हैं पिस्टिल का स्ट्रक्चर और पोलन स्टिग्मा के बीच क्या इंटरेक्शन होती है। थोड़ा बहुत आपने यूजी में भी इसको पढ़ रखा है और 12th में भी पढ़ रखा है, उसी का डिटेल पोर्शन यहाँ पर हम लेंगे। What is pollen pistil interaction? The sequence of event which is carried out from the time of pollen deposition over the stigma until the entry of pollen tube inside the ovule is called pollen pistil interaction. What is pollen pistil interaction and how it is mediated? The pollen pistil interaction is a dynamic process. It involves the pollen recognition followed by promotion of inhibition of the pollen. This interaction is mediated by chemical component of pollen and the pistil. What is the importance of the pollen pistil interaction? Pollen pistil interaction determines the suitability of pollen for carrying out the process of sexual reproduction. It has freed the seed plants from the dependence of an external water during fertilization. Then आता है what is the significance of pollen germination? During germination, the tube cell elongates into the pollen tube in the flower. The pollen tube then grows towards the ovule where it discharges the sperm produced by the pollen grain for fertilization. The germinated pollen grain with its 2 sperm cell is the mature male gametophytes of these plants. Then इसी में आएगा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर। पहले में टेक्निकल टर्म्स ले रहे हैं, ध्यान रखें। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज ए मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स द पोलन फ्रॉम वन फ्लावर फ्रॉम द फर्टिलाइजिंग अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ये इस तरह से रोकती है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज ऑफन ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स बिलोंगिंग टू सच फैमिली सच एज सोलेनेसी एंड रोजेसी। व्हाट इज द बेनिफिट? Self-incompatibility is a general name for several genetic mechanisms in angiosperm which prevent self-fertilization and thus encourage outgrowth and allogamy. बच्चों, fertilization in flowering plant is a unique phenomena and it involves 2 fusion process. One is called syngamy. It means the fusion. Syngamy, it means fusion of one of the male gamete and egg, and the triple fusion means between the other male gamete and the fused nucleus. Successful fertilization leads to the fruit and seed development. 2n से तो आपका सीड बना और बाकी से उसके डेवलप करने वाला एंडोस्पर्म बने एंजियोस्पर्म के केस में। The process leading to fertilization are initiated on the stigma. Soon after pollination, the crucial decision of recognition followed by subsequent acceptance or rejection of the male partner is made by the pistil. The chain of sequential integrated process in the pistil following pollen recognition regulates the post-pollination behavior of the pollen. If the pollination is incompatible,
The pollen grain germinate on the stigma and the pollen tube grows through the style and eventually reaches the embryo sac, where it discharges the male gametes. If the pollination is incompatible, अगर ये compatible है तो ये रहेगा, और अगर incompatible है the pistil will effectively prevent the fertilization. कैसे रोकेगा फर्टिलाइजेशन को? बाय इनहिबिटिंग इधर पोलन जर्मिनेशन या एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द स्टिग्मा या ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टाइल. इस तरह से ये रोक सकता है. द पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन देयरफॉर of paramount importance in the biology of sexual reproduction, because the vital function of the selection of the male gametes in the flowering plant is performed not by the egg but by the pistillate tissue. For the rational understanding of the pollen pistil interaction and fertilization, it is important to understand the structure of the pollen grains and the pistil in relation to their function of recognition and rejection reaction. The basic event of the pollen pistil interaction leading to fertilization became known by the end of the 19th century. Following the realization of the significance of plant hybridization, the program in crop management, limitation of these traditional approaches to study on fertilization becomes apparent. This realization, coupled with the general trends of the plant sciences to become experimental, result in the interaction of histochemical, ultrastructure and biochemical techniques to unravel the mysteries of fertilization. Significant progress has been made on these lines during the last 2 decades. So, in this class, we largely deal with these later development on the process from pollination to fertilization. इस तरह से ये इवेंट रहेगी. ये पोलन ग्रेन यहाँ पर गिरे, ये जर्मिनेट होंगे. हो सकता है ग्रोथ नहीं हो इस इंटरेक्शन की वजह से, हो सकता है ग्रोथ होके आगे रुक जाए, इस तरह की स्टेज रहेगी, और हो सकता है आगे ये बढ़े नहीं और बढ़ जाए तो फर्टिलाइजेशन ना हो. तो ऐसे अलग अलग स्टेज आप यहाँ डायग्राम्स में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसको रोका जाता है. थ्रू compatible pollination, the pollen grains germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. The content of the pollen grains move through the pollen tube to reach the ovule in the ovary at the micropylar end. The pollen grains are surrounded by the two-layered wall, the exine composed of the sporopollenin and the pectocellulosic intine. The exine is a more elaborate structure differentiated into an outer sculptured layer. The most of the classical studies were made on the acetolized pollen and concerned with the morphology of exine. Recent progress in our understanding on the structure of the pollen grains comes from the studies. Recent progress in our understanding on the structure of the pollen grains comes from the studies of the unacetylized pollen walls. Both wall on the pollen grains and the exine intine have now been demonstrated to contain a large amount of the mobile protein. These includes many hydrolytic enzymes and protein responsible for pollen allergy. The intine proteins are present in the form of tubular or leaflet and are generally concentrated near the germ pores. In the exine, the proteins are located in the sculpture region of the exine in the chamber between the vacuolae and the surface depression. These wall proteins are readily released in the medium of the moistening. The origin of these pollen wall protein is diagrammatically represented in the figure. The intine protein are produced in the pollen cytoplasm and incorporation of the intine during its development. As the deposition of intine process soon after the release of microspore from the tetra, the plasma lemma of the pollen cytoplasm sends out radially oriented tubules into the developing intine. Eventually, these tubules with their protein inclusions are cut from the plasma lemma and sealed off from the cell surface by the deposition of layer of intine free from the tubules. In aperture pollen, the intine protein are principally concentrated in the region of germ pores. In non-aperture monocotyledons pollen, they are distributed throughout the intine. In the cosmos bipinnatus, the incorporation of the intine protein is rather unique. Instead of tubular investigation,
invaginations, leaflets of plasmalemma with their protein inclusion get separated from the cytoplasm and become incorporated in the intine in the form of series of tangentially oriented lamellae. The sculptural layer is made up of the radially directed rods, the vacuolae, which may be enclosed about to form tectum or stand free or joined together to form various pattern non-tectate grain. In tectate grains, the tectum is invariably perforated by the micropores. इस तरह की ये स्टेज रहेगी बच्चों, जैसे पोलन गिरेगा लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, पोलन हाइड्रेशन होगा, पोलन जर्मिनेशन होगा, पोलन ट्यूब एंट्री होगी स्टिग्मा पे एंड पोलन ट्यूब ग्रो होगा इनसाइड द स्टेरा। ये इस तरह से मेजर पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स हैं जो कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के दौरान। अब ये बैरियर इस जगह आएंगे। अगर इंट्रा स्पेसिफिक बैरियर तो यहाँ वर्क करते हैं, पोलन हाइड्रेशन से पोलन जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, देन जर्मिनेशन हो भी गया तो एंट्री भी रुकआउट हो जाएगी, और अगर एंट्री हो भी गई तो यहाँ तक पहुँचने में रुकआउट होगा। और इंट्रा स्पेसिफिक बैरियर इस तरह से 4 स्टेजेस पर वर्क करते हैं। इसको और ज़्यादा डिटेल में बच्चों, बहुत अच्छा डायग्राम है ये, इससे आप देख सकते हैं किस तरह से इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी में वर्क करेंगे होमोमॉर्फिक सिस्टम में, और इंटर स्पेसिफिक में ये वाले रिजेक्शन वाले वर्क करते हैं। और टोटल इवेंट्स ये रहेगी। कैसे इवेंट्स होएगी? पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स, पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा, देन पोलन हाइड्रोलिसिस, रिलीज ऑफ एक्साइन एंटाइन प्रोटीन। तो अगर इस तरह का रिजेक्शन होगा तो यहाँ इस स्टेज पे रुक जाएगी, पोलन का हाइड्रेशन नहीं हो। देन पोलन जर्मिनेशन, ये वाली स्टेज होगी, फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर पोलन जर्मिनेशन एब्सेंट हो जाएंगे। देन पोलन जर्मिनेशन के बाद क्यूटिनेज एक्टिवेशन, क्यूटिनेज प्रिकर्सर और पोलन डू नॉट मैच विद द एक्टिवेटर ऑफ द प्रिकर्सर, नो क्यूटिनेज एक्टिव। तो क्यूटिनेज जब एंजाइम एक्टिव ही नहीं होगा तो वह जर्म उसको पेनेट्रेट नहीं कर पाएंगे। देन पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द स्टिग्मा, देन पोलन ट्यूब ग्रोथ, ये यहाँ वर्क करेगा इस जगह पर, इस रिजेक्शन वाले इस वाले में। एक्साइन प्रोटीन्स एंड स्टिग्मा सरफेस प्रोटीन एस्टेब्लिश रिकॉग्निशन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। देन ये वाला वर्क करेगा इस वाली स्टेज के अंदर, यहाँ भी ये वाले वर्क कर रहे हैं दोनों ही केस में, पोलन ट्यूब ग्रोथ इनटू द थ्रू द स्टाइल, इसको ये रोकने में। देन इस वाली स्टेज पे ही वर्क करेंगे पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द ओवल। तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस बहुत ही अच्छी बना के दे रखी है इस डायग्राम में, the probable sequence of recognition and rejection during the pollen pistil interaction। तो इसी स्टेज पर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के जरिए इनकी एंट्री रोकी जा रही है, हम करना चाह रहे हैं। इस तरह से पोलन ग्रेन का अगर हम देखें तो ये से पोलन ग्रेन बनता है, ये इसकी संरचना एक्साइन इंटाइन, और ये इस सरफेस के जरिए ये होता है। A diagrammatic representation of the origin of pollen wall protein. The intine proteins are product of the pollen cytoplasm and the exine protein are the product of tapetum। ये शिवाना प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनका काफ़ी वर्क है, वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड वर्क है इस पर। इस तरह से ये वही जो चीज़ हमने पहले बताई थी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कुछ तो जर्मिनेट नहीं हो पाए, हो गए तो ये ट्यूब ग्रोथ नहीं पाई, और हो गए तो यहाँ तक आगे प्रोसेस नहीं। इस तरह से पोरोगेमी में, चेलेजोगेमी एंट्री के आधार पर ये नाम दिए गए हैं, पाथ ऑफ पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द ओवल। इस तरह से ये पोलन ट्यूब ग्रोथ एंड फर्टिलाइजेशन, ऐसे ये अलग अलग बैरियर पे ये रुके। ये स्ट्रक्चर स्टिग्मा है, ये स्टाइल है ओवेरी, जो आपने पहले एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ ही रखा है। The exine protein on the other hand originate in the cells of the surrounding tapetum, sporophytic tissues during the meiosis of microspore mother cells. Proteins and lipid accumulate in the tapetal cell. When the tapetum wall breaks down towards the end of the pollen development, protein and lipids are released into the thecal cavity and eventually become deposited in the surface depression of the exine. The tectate grains, the protein fraction passes through the micropores of the tectum and the accumulates in the space between the vacuolae. The lipid remain on the surface of the tectum, thus the entire proteins are the product of the pollen cytoplasm and male gametophyte, and the exine proteins, the product of the tapetum, the sporophytic tissue.
The significance of differential origin of the exine and entine protein in controlling the breeding behavior of the species is discussed later. अब देखें पिस्टिल का स्ट्रक्चर जो आपने अभी डायग्राम में भी देखा है. ट्रेडिशनली टू बेसिक टाइप्स ऑफ द स्टिग्मा हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड. द वेट टाइप, which is the receptive surface, become covered with the exudates, and the dry type, in which the receptive surface is free from the any apparent exudate. Recently, variation in these two major categories of the stigma have been divided into the further groups. A study on the classified stigma of 1000 species covering 900 area belonging to over 250 families. The details ये इसमें दे रखा है. इस तरह से इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं. ड्राई स्टिग्मा इसके ग्रुप फर्स्ट में ये है, देन ग्रुप सेकंड में रिसेप्टिव सेल्स, कंसंट्रेटेड डिस्टिंक्ट डिजीज, और फिर इसको आगे इस तरह से कैटेगराइज करें. इसे क्योंकि 4 ग्रुप हमने इसके ये बनाए हैं. In Nelium, on the other hand, the cells of the stigma are non-secretory. The exudate is presumably secreted by the canal cells of the hollow style and exudate on the stigmatic surface through the stylar canal. The composition of exudate is highly variable and contains the varying proportion of the lipid, carbohydrate, and phenolic compound and protein. In petunia, the case of the petunia, the exudate is largely lipoidal and has no nutritive value role for the germinating pollen. In the case of the lilium, the exudate is aqueous and consisting largely of carbohydrate and a small amount of proteins. Arabinose is the one of the major carbohydrate of the exudate and form the 28% of dry weight. When the exudate is added to the pollen culture medium, it stimulates pollen germination and tube growth and is taken up by the pollen tubes. The lipoidal substance of the exudate help in the trapping the pollen grains and to protect the stigma from the desiccation and wetting. The phenolic compounds are presumed to be the helpful in protecting the stigma from the microbes and pests. Recently, there has been evidence to implicate the phenolic compounds in pollen nutrition and in selective promotion, inhibition of pollen grains on the stigma. The dry stigma are free from any apparent secretory products and are generally covered by an unruptured cuticle of varying thickness. Recently, presence of hydrated proteinous covering terms of the pellicle has been shown to invariably present on the surface of cuticle. Although details of the origin of pellicle are yet to be investigated, the cuticle has been shown to have discontinuities through which the pellicle is presumed to be exudate on the surface of papillae. The dry stigma is therefore not really dry, it was thought earlier, but covered with the pellicle, which is physiological comparable to the exudate of the wet style. The canal cells are generally glandular and often become multinucleate and polyploid. In the lilium, the canal cells have the characteristic thick dome-shaped outer tangential wall. Electron microscopic studies of the transmission tissue has been conducted in the case of the petunia. Recently, the intracellular substance in the Lycopersicum peruvianum has been shown histochemically to contain the proteins. According to Shashan, there is no basic difference between the structure of solid and hollow style. The cells of the transmitting tissue of the cotton, however, is not surrounded by any intracellular substance. The lateral walls of it thin and consist of the 4 distinct layers, including the outermost pectinaceous middle layer. Pollen pistil. The first visible change in the pollen soon after it lands on the stigma is hydration. Simultaneously with the hydration, pollen wall proteins, first the exine protein and then the entine protein, are released in the stigmatic surface. The outflow of the pollen wall protein can be readily detected by the immunofluorescence. If the pollen grain is compatible, the pollen tube soon emerges and come in the contact with the cuticle of the stigmatic papillae. The cuticle eroded at the point of contact and pollen tube enters the inner pectocellulosic wall and grows down the papillae. The event from pollination to pollen tube entry into the papillae are rapid and completed in less than 30 minutes in many taxa. In cotton, which is also characterized by the stigma with a covering of cuticle,
The pollen tube has been reported to grow down the papillae on the surface of the cuticle without entering the cuticle. However, the recent studies clearly shown that in cotton as well as in many other related taxa, pollen tube invariably enter the cuticle and grow through the wall of papillae. Then pollen tube growth. In taxa characterized by wet stigma, the cuticle is generally ruptured during the deposition of exudate and pollen tube enters the stigmatic surface. In the case of the petunia and other taxa characterized by solid style, pollen tube grow through the intercellular substance. Chemotropism. On the one of the controversial aspect of the pragmatic phase in the nature of the chemotropy factor which guides the pollen tube from the stigma to the embryo sac. Many investigators have been demonstrated using in vitro experiments positive chemotropic factor of various parts of the pistil to pollen tube. In cultured pollen grains of the Antirrhinum majus demonstrated calcium to be the chemotrophic factor. They also found a gradation in the distribution of total calcium from stigma to ovule in the pistil. Then fertilization. The male gametes are released in the synergids through the pore formed at the tip of the pollen tube, and by rupture of the pollen tube, many hypotheses have been proposed to explain the causative effect of the rupture of the pollen tube in the embryo sac. The only explanation in which some experiment basis proposed Stanley. According to this hypothesis, rupture of the pollen tube is caused by low oxygen tension in the embryo sac. Experiment evidence for this concept come from so and so. The styler candidate this plant and showed high oxygen tension in the stigma and style and a sharp drop in the lowermost 5 mm of the style and ovary. In the pollinated pistil, there is a drop of oxygen tension which progressed along the growth of pollen tube. This led to the suggestion probably lower oxygen tension in the embryo sac setup cell wall stress in the pollen tube tip causing it to rupture. One of the important features of fertilization that has been observed in many systems is the presence of a gap in the cell wall between the synergids and egg and between the synergids and central cell. The male gametes enter in the cytoplasm of egg and central cell through these gaps. Eventually, the nuclear membrane of the male gametes and the egg fuses, resulting in the nuclear fusion. इस तरह से डायग्राम्स है, ये समरी फॉर्म में हम कर सकते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये वो डायग्राम जो पहले आपको दिखाया है उसी तरह से है, ये किस किस स्टेप पे बैरियर है। नेक्स्ट आप जो डिटेल में जहाँ पढ़ना रहेगा बेसिक चीज़ें आप भोजवानी भटनागर से ही पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके आते हैं तो वो भी उसमें वेरिएशन वाले आप देखें। एक ये सिंह पांडे जैन की बुक जो आपने पढ़ी है बीएससी में, उसको भी आप बेसिक चीज़ें देख सकते हैं। पुरानी वेल एस्टेब्लिश बुक है गांगुली कार, इसमें भी कई चीज़ें सिस्टमेटिक है यूजी लेवल के हिसाब से और हायर देन यूजी। तो जो आपकी एक लाइन के क्वेश्चन है काफ़ी इसमें कवर हो जाएंगे और जो हमने बताया है वो रिटर्न के हिसाब से मैकेनिज्म जो है वो है। और रहा मामला इस पूरे चैप्टर की समरी का, एक तो ये डायग्राम है जिसको आप याद रखें और एक ये वाला है, इसमें आपको पूरे चैप्टर की बच्चों समरी आ जाएगी। तो इसको आप अच्छी तरह कंठस्थ करें और इसको समझने का प्रयास करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से ये पूरा है। थैंक यू।